the women, the youth, and the Annadata. So, Disha Nirdeshak Batein, you have the second point. Third, focus on infrastructure. This year, again, massive increases of capex happened in the last 4 years. This year, too, there is 11% increase, resulting in a very recallable number, 11,111 crores. So continuing the trend of the last 4 years, where capital expenditure has been the route, one for revival earlier from COVID, and now for sustained growth towards towards the Vikasit Bharat goal. Fourth is the using of technology as a huge opportunity. DPI as almost a new factor of production. So it is actually bringing in the value addition to the economy. It is facilitating every sector to bring in the value addition which is so required and improves on our productivity. And the last Disha Nirdeshak Batein is high-powered committee for extensive consideration of challenges arising from population growth and demographic challenges. So if these are Disha Nirdeshak Batein, what were the major announcements? I'll recall very quickly 12 of them. I'm not spending any time except for reading out what those 12 are. 2 crore more homes under the PM Awas Yojana. We already completed nearly the 3 crore. Housing for middle class. Rooftop solar for at least 300 units of power generation every month, which will be Muft Bijli for the households. There will be some assistance and some kind of funding இன்று வரைக்கும் உள்ள சட்டமன்ற நடவடிக்கைகளை எல்லாம் ஆன்லைன்ல பார்க்கிறதுக்கு வசதியாட்டு தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுத்துக்கணும். எல்லாமே that which they would want to use, and over and above that, the surplus that they produce can be used for selling and earning money out of it. Enhancement of target for Lakpati Didi from 2 crore women to 3 crore women. Preparing and empowering the MSMEs to grow and compete globally. Aligning regulatory environment for them. The sixth is making sure that the eastern region, and when I say eastern region, I'm not talking about northeast. Northeast will get the attention that they've been getting all the while. They will still continue to get it, and they will be on the top of our priority. But when I say the eastern region, I'm talking about Bihar, Jharkhand, Chhattisgarh and Orissa, making sure that they will become the engines of growth. யானவாவி மசூதியில் உள்ள தெற்கு நிலவரத்துக்கால் India that we are trying to use as a bridge towards leading to Vikasit Bharat 2047. And Eastern India, I've missed out on West Bengal, please add it. Bihar, Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh and West Bengal. Next generation reforms will be carried on, building consensus with states and stakeholders for reform, perform, transform. 3 major corridors, which are programs for railways, for logistics efficiency, and they have been explained. The important point that I want to highlight there is to make sure for Vikasit Bharat. Cement, rare earths, minerals, we need them to move efficiently as well. So the corridor will take care of that as well. So the synergy between movement of people and movement of goods is what is being highlighted in the 3 corridors.
MCLR day 1வது எபிசோட் கிட்டத்தட்ட 4 மாதங்கள் தொடங்கி ஆரம்பித்து 4 மாதங்கள் 100வது எபிசோட் வெற்றிகரமாக. One of the railway related things which I missed out on telling you, 40,000 bogies are going to be improved in the standards with which they can be effective rolling stock and also give the convenience in the passenger experience inside the bogies as well. So 40,000 coaches are going to be brought up to the level of Vande Bharat standards. Metro and Namo Bharat I did mention, so that urban transformation through transit-oriented development can happen. The 10th announcement which I draw your attention to is 1 lakh crore corpus for research and innovation by private sector. So that's coming in at the 10th. 11th is boost to tourism, including spiritual tourism. Interest-free loans will be given to states so that they can build on iconic tourist centers. And the 12th one is supporting reforms in state. They are separate from the development of tourism centers, and therefore I want you all to have the clarity that help to centers are supporting reforms in state is slightly different from boost to tourism. There will be a white paper on economic performance of the last 10 years compared with the previous 10 years. The 12th announcement is so much a statement that I would like to make, which is what I made in the budget speech as well. Government has got the trust and the confidence and the blessings of the people based on its exemplary track record of GDP, as I said, governance, development and performance, effective delivery, and also on Jan Kalyan. So highlighted points have been realized as goals of Vikasit Bharat till now, and they are the realized in the full budget in July, Honorable Speaker. Because what we want to underline is we govern with good intentions, true dedication and hard work in the coming years, and that's why Amrit Kal is also now called Kartabya Kal. In short, that's a budget. Thank you very much. The Finance Minister has just now encapsulated the key highlights of the budget. We'll now open the floor. We can begin with the front row here. Please go ahead, 53. Please hand over the microphone here. Hello, ma'am. This is Priyashmita from Informist Media. Ma'am, I wanted to know about the projections in your tax collections. So tax collections are seen currently growing at about 14.4%. Your April to December data shows. However, the projections in your budget are lower than that. So a back of the envelope calculation shows that you're going to get about 55,000 above your revised estimate if the collections continues. So your estimates are conservative, would you say that? I'll certainly ask Somanathan to come in on that. Estimates are always realistic with us. So let me clarify this. If you look at page 6 of the budget, you can look at it later. I'll just explain it to you. We are projecting that gross tax revenue. Now, this gross tax revenue in this sheet is net of refunds. So net of refunds, we are projecting that in this financial year, it will grow by 12.5% with reference to last year's actual. So from 30.54 lakh crores last year to 34.37 lakh crores this year is what is presented in our revised estimates. However, the sharing of taxes with the states is different. 9ஆம் வகுப்பு பாடப்புத்தகத்தில் டேட்டிங் மற்றும் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் குறித்த பாடங்கள் இடம்பெற்றிருப்பது இணையவாசிகள் மத்தியில் பேசுபொருளாகி உள்ளது. மதிப்புணர்வு கல்வி பாடப்புத்தகத்தில் டேட்டிங் குறித்த பாடம் இடம்பெற்றுள்ளது. இது தொடர்பான புகைப்பட 14% etc. Union excise duties have grown -5%. That reduction is almost entirely on the account of the center. Because the same way that cesses are not shared, reduction in cesses is entirely borne by the center. So as a result,
the state's share has increased by 16.5% in our revised estimates. Between the state share in the revised estimate and the state share last year, there's an increase of 16.5%. So taxes are growing 12.5% net of refunds. State share is growing 16.5% net, and therefore net to center is growing only 10.8% approximately. So there is no expected further, padding or anything here. This is our realistic but slightly conservative estimate. Okay, the next question, please. 65. Please go ahead. எங்களுக்கு தெரியும் இதாரு இதுக்கு எங்க போட அப்புறம் இதுல போடாம மண்டையில போடுவாங்க இதான குப்பை தொட்டியா பின்ன ஆட்டு தொட்டியா இங்க என்ன எழுதி போட்டு படி என்ன போட்டிருக்கு உங்களுக்கு தேவையில்லாத பொருட்களை இங்கே போடவும் அப்புறம் எனக்கு வாழைப்பழ தோல் தேவையில்லை அதனாலதான் இங்க போட்டேன் அதுக்கு கீழே என்ன எழுதி போட்டு கதைப்படி அதுக்கு கீழே அது எங்களுக்கு தேவைன்னு எழுதி இருக்கு இது எங்களுக்கு தேவையா அது யாருக்கு தேவை மாட்டுக்கு தேவை படி இதுக்கப்புறம் நீ என்ன சொல்ல போறீங்க எனக்கு தெரியும் இவன் அவனே தாண்டா இவன் அதுக்கு சரிபட்டு வர மாட்டான்டா Capex. 11% growth in Capex. You've got used to about 30%, 23% from a low base. And today 11% on a high base appears low, informist. 11 lakh crores going for capital expenditure. And you're seeing also that the private sector is coming in with their investments. So one has to have a clear understanding that when the government wants to spend through capital investment, it can be for one, triggering the economy so that private sector also comes in. At a time when private sector didn't come in, we still fully came in. Now we are seeing also signs of private sector also coming in. So it's only natural for two reasons, therefore, for you to look at. One, on what base are you saying 11% is less? Growth it is. And second, please do look up if private sector is coming in or not. Does that answer you? Yeah. The next question, we'll take it. Wait. Still? On your 40% of, first of all, that was a figure that was set before COVID. Its relevance today is something that has to be looked at completely afresh. And in fact, in 21-22, the finance minister had set out a particular fiscal consolidation glide path, which is apart from other countries. So we have to look at historical before COVID happened. Yeah. And again, our external debt also is something which you should notice has never been high, not high even now. Yeah, second row, I would request you to confine to one question, please, because there are many questions coming up. Yeah, thank you very much. Please go ahead. Yeah. दूसरा दे दीजिए. Give this another. नमस्कार मैम, आलोक प्रियदर्शी हूँ मैं CNBC आवाज से. मेरा सवाल मैम ये है कि एक कंज्यूमर के नाते, एक टैक्स पेयर के नाते हमेशा लोगों की ये उम्मीद रहती है, या इस देश में कैसे कह सकते हैं कि चुनाव इतने ज्यादा आते हैं कि लोगों को लगता है कि जब चुनाव आएंगे तो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, टैक्स के मोर्चे पर कहें, या फिर जो पॉपुलिस्ट मेजर्स सरकार लेती है. लेकिन क्या इस मिथ को क्या ये सरकार तोड़ना चाहती है कि जब चुनावी साल होगा तो पॉपुलिस्ट बजट नहीं देंगे? जिस तरह से फिस्कल प्रूडेंस की आपने बात करी, आपने फिस्कल प्रूडेंस को लेकर काफी जोर दिया है इस बार बजट में, तो ये इस बात का कॉन्फिडेंस सरकार को ज्यादा है कि वो अगली बार पूरी तरह से आके और जनता के जो उनकी उम्मीदें हैं उनको पूरी करेगी, या फिर सरकार इसी तरीके से जिस तरह से फिस्कल प्रूडेंस का जो रास्ता है उसको अख्तियार करेगी और उसी हिसाब से चलती रहेगी, और चुनाव के मौके पर लोग, आम आदमी एक्सपेक्ट ना करें कि कोई पॉपुलिस्ट बजट आ सकता है? आप डिस्कशन जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं भाई. मैं पहले से बोलते आई हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी भी इस विषय में बोलते थे, कल परसों भी उनका बयान है. वोट ऑन अकाउंट क्या है, कैसे है, आपको मालूम है. सो वी लार्जली केप्ट vote on account as vote on account, but also showed
how the economy will be moving forward and what's our plan for it. Who are we going to aim at when in July, when we come back to present a budget? Who are the sections who will be addressed? What are the kind of investments we'll make? However, very clearly showing that on capital expenditure, we are showing an increasing growth. More money is being put in for that, for innovation, and so on. So announcements भी है, ये नहीं है कि vote on account है, इसमें कुछ और नहीं है. Announcements है, दिशा निर्देशक बातें भी है. So vote on account and interim budget को कैसे, किस हद तक उपयोग कर सकते हैं, और वो भी confident सरकार, उस हद तक हमने use ही किया है. Yeah, Z Business, and after that you hand over the microphone to your right. Yeah. मैम, आपने दो बड़ी स्कीम्स का ऐलान किया, एक अर्बन एरिया के अंदर हाउसिंग स्कीम का, दूसरा रूफटॉप सोलर के लिए. मैम, इसका बजट एलोकेशन कितना है? एक सवाल. दूसरा सवाल मैं मैम पूछना चाहूँगा डाइवेस्टमेंट के ऊपर. मैम, पिछली बार 51,000 करोड़ का टारगेट था, वो टारगेट नहीं मीट हो पाया. इस बार बजट में ये नहीं मिल पाया कि कितना टारगेट अगली बार के लिए रखा गया है, और ऐसे टाइम पे टारगेट नहीं पूरा हो पा रहा है जब मार्केट, इक्विटी मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है. சிறந்த சேவை திட்டமான மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண வசதியின் மூலமாக மகளிர் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 44 லட்சம் பேர் பயணம் செய்து வருகிறார்கள். இதற்காக 7,105 சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த கட்டணமில்லா பேருந்துகளை அன்றாடம் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். இந்த புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இதுவரை சுமார் 2,000 கோடி ரூபாய் பணம் மகளிருக்கு சேமிப்பாக மாறியுள்ளது என்பதை பெருமையோடு 18 लाख करोड़. तो हमने 42 लाख करोड़ की वेल्थ क्रिएट की है पब्लिक सेक्टर में, और उसको माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स जो उसमें हैं उन सबके साथ उनकी वेल्थ शेयर हुई है. तो आप वेल्थ इफेक्ट नहीं देख रहे हैं, आप सिर्फ उसमें से वेल्थ में से हम क्या निकाल रहे हैं, लेकिन वो जो वेल्थ जनरेट करना भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है. एक साल लोन में हमने 25 लाख करोड़ का एडिशन किया. तो आप समझ सकते हैं कि 2014 से जब हमने 4 लाख 4.2 लाख करोड़ का डिविडेंड किया और 4 लाख करोड़ का हमने डिविडेंड दिया है आज 8.5 इसके मुकाबले एक ही साल में 25 लाख करोड़ का हम मार्केट कैप है. तो ये जो वैल्यू अनलॉकिंग स्टोरी, इसका मतलब ये है कि आपको डिसइन्वेस्टमेंट करना है तो वेल्थ भी इम्प्रूव करनी है, शेयर की वैल्यू भी लेनी है, और तब डिसइन्वेस्टमेंट कैलिब्रेटेड वे से करना है. इसलिए सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट का एक तो हमने कोई फिक्स टारगेट कभी इसे नहीं रखा. हमने ये कहा है कि हम एक अदर रिसीट्स में बजट मॉनेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट तो वो सब जाते हैं. और दूसरा रिसीट का एक इश्यू है कि हम कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन एक मार्केट में ये देना कि हम शेयर बेचेंगे इसी प्राइस पे बेचेंगे, इसके कारण उसका पर्टिकुलर मार्केट. इसलिए जो हमारा वो है कि हमारा जो रेवेन्यू है और दूसरी इम्पोर्टेंट स्ट्रैटेजी है कि डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं. जब हम कंबाइंड कह रहे हैं हम 92,000 करेंगे तो कंबाइंड आप देखिए, और नॉन टैक्स रेवेन्यू इज द बिगेस्ट स्टोरी. लगभग 75,000 करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड हो रहा है और हाईएस्ट ग्रोथ उसमें है. और अब लगभग 1 लाख करोड़ जो है, यदि आप बजट से देखें और बजट में देखें तो 1 लाख करोड़ का नॉन टैक्स रेवेन्यू हम ऐड कर रहे हैं. और नॉन टैक्स रेवेन्यू ऐड में डिविडेंड की बहुत बड़ी भूमिका है. इसलिए अब कंबाइंड बेसिस सारे रूफटॉप सोलर के लिए 10,000 करोड़ का प्रोविजन है. As regards the urban housing scheme, its contours are being worked out, and there is a token, and it will be funded when the exact contours are finalized. Yeah, the next question, please go ahead.
81, please. Okay, I mean, go ahead, yeah. That's from MC now. The benefit of lower tax rate of 15% has been extended for investment by foreign members. My question is, I mean, has it also been extended for manufacturing? I'm asking, seeking clarity. No. Thank you. Yeah. Bloomberg, Ruchi. Ma'am, some of the rating agencies have said that they will take a call on a ratings upgrade for India only after the next budget. But given that this budget is yours, you did say that it has been transparent, you maintained the path of fiscal prudence as well. What will be your message for rating agencies? Not only aligning with the fiscal consolidation roadmap that you gave earlier, but bettering it. இந்த புள்ளி விவரங்களை அடிப்படையில் பார்த்தால் இதுவரை சுமார் 2000 கோடி ரூபாய் பணம் மகளிருக்கு சேமிப்பாக மாறியுள்ளது என்பதை பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். Yeah, please go ahead. Sapna here from CNBC TV. Ma'am, two questions. One very broad, generic. Excellent work in terms of fiscal consolidation. Just want to understand, is it slightly ambitious to have a 1.1 number right away in 2 budgets? I mean, broadly expectation was July budget, you will start spending. No, I don't mean that. No, I don't mean that, but just try to understand, like in 2 years, you'll be able to do 4.5%, very broad understanding, ma'am, one is that. Second one is talking about next generation reforms. Within that context, the government has had a massive privatization agenda. There isn't seem to be any mention of that as of now. To him, Sapna, you asked him the same thing. No, but went elaborately on it. But will you still be sticking to it? Just broadly wanted to understand. Yeah, please go ahead. அரசின் மிக சிறந்த சேவை திட்டமான மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண வசதி மூலமாக மகளிர் ஆளொன்றுக்கு சராசரியாக 44 லட்சம் பேர் பயணம் செய்து வருகிறார்கள். இதற்காக 7105 சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த கட்டணமில்லா பேருந்துகளை அன்றாடம் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். இந்த புள்ளி விவரங்களை அடிப்படையில் பார்த்தால் இதுவரை சுமார் 2000 கோடி ரூபாய் பணம் மகளிருக்கு சேமிப்பாக மாறியுள்ளது என்பதை பெருமையோடு avail this corporate and what kind of work or research and innovation are we focusing on? Sectors and how this scheme will work? So I'll tell you the quantitative part and Secretary EA can expand on the sectors. There is the 1 lakh crore is approved over a period of time as the rules emerges. This will be provided as a 50-year interest loan to a financial institution which will be identified. It will be within the government சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு at long tenors and at இந்த புள்ளி விவரங்களை அடிப்படையில் பார்த்தால் இதுவரை சுமார் 2000 கோடி ரூபாய் பணம் மகளிருக்கு சேமிப்பாக மாறியுள்ளது என்பதை பெருமையோடு குறிப்பிட also. As regards the sectors, I leave Secretary. See, as announced in the budget speech, these are the sunrise sectors. And what is the economic logic behind it? These are the innovations and research. அரசின் மிக சிறந்த சேவை திட்டமான மகளிருக்கு கட்டணமில்லா பேருந்து பயண வசதியின் மூலமாக மகளிர் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 44 லட்சம் பேர் பயணம் செய்து வருகிறார்கள். இதற்காக 7105 சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த கட்டணமில்லா பேருந்துகளை அன்றாடம் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டுள்ளனர். இந்த புள்ளி விவரங்களை அடிப்படையில் பார்த்தால் இதுவரை சுமார் 2000 கோடி ரூபாய் பணம் மகளிருக்கு சேமிப்பாக மாறியுள்ளது என்பதை பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். Just to clarity, ma'am. One is about the TCS. Some changes have been made in the TCS on the LRS
So what are those changes? There is not much clarity because explanatory memorandum is not there. And the second part is the housing scheme. Will it be just like an interest subvention scheme or what will be the control? மகளிர் நாளொன்றுக்கு சராசரியாக 44 லட்சம் பேர் பயணம் செய்து வருகிறார்கள். இதற்காக 7105 சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த கட்டணமில்லா பேருந்துகளை அன்றாடம் வேலைக்கு செல்லும் பெண்கள் பயன்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த புள்ளி விவரங்களின் அடிப்படையில் பார்த்தால் இதுவரை சுமார் 2000 கோடி ரூபாய் பணம் மகளிருக்கு சேமிப்பாக மாறியுள்ளது என்பதை பெருமையோடு குறிப்பிட விரும்புகிறேன். In the press release. Your question on housing was? What will be the contours? It's still being worked out. Interest subvention? It could be one of the features of the scheme, but nothing has been finalized yet. It is under discussion between the Department of Financial Services. Multiple options are being considered on how to achieve the purpose that has been defined. Hello ma'am, this is Chitravanshi from Business Standard. One question was regarding relating to the announcement you made about the withdrawal of demand for outstanding tax. What will be the cost to exchequer for the tax that will be foregone? And second, a small clarification. The 75,000 crore 50-year loan that is linked to the milestone reforms. Yeah, is that in addition to the 1.3 or is it part of it? So, all of you would be aware, that there are a large number of small demands that are pending with respect to income tax, wealth tax, gift tax. The number in all about 2.68 crore such demands. The total amount of course is 35 சாதாரண கட்டண நகர பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன. இந்த but many of these demands about 2.1 crore in fact, 2.1 crore out of 2.68 lakh demands are valued less than 25,000 rupees. Now, many of these demands are very, very old, dating from 1962 when Income Tax Act was enacted, and right now till very recently till today. So